of z, if we get only one value for w, then the function is said to be a single valued function. Okay, for example z square, w is equal to z square. तो z को अगर हम लोग 1 पुट करेंगे या -1 पुट करेंगे, w will be equal to only one value, right? अगर z को 1 पुट किया तो w की वैल्यू 1, z को -1 पुट किया तो w की वैल्यू एक ही आ रही है, 1 ही आ रही है. Okay, so such type of functions are called as single valued function. Now suppose for one value of z, if you get 2 or more values of w, then it is said to be a multiple valued function. For one value of z, if we get 2 or more values of w, then the function is called as a multiple valued. For example, if I take w is equal to root z, okay, so w is equal to root z means we can write w square equal to z, or w square will be equal to plus or minus, w will be equal to plus or minus something. So we will get 2 values for w for a single value of, because w square, if it is equal to 1, then w is equal to plus or minus root of 1. So we will get 2 values for that. That is why it is said to be a multiple valued function. But in this whole chapter, we are going to consider only single valued function. Okay. Now, I think you have done limits of a function in 12th standard. You know how to apply a limit, and a limit extending to something of some function. What do? Normally, you put the value of x equal to, and then we had some standard limits. The same definition here also. There we had f of x. Now we have f of z. There's no difference in the definition, but the answer will be in terms of u and v. Okay, the limit z tending to z naught, f of z will be equal to w naught. This is same what we apply for real function. This is the same definition we have defined when we had done limits in 12th standard. The same you may not be remembering these definitions. So I'll just go through those. Continuity also. The definition there, it was f of x is equal to f of x naught. Here we have limit z tending to z naught, f of z equal to f of z naught. The same definition what we had in the real number, the same definition we have it for the complex numbers also. Differentiability, do you remember the first principle formula we have done in 12th? थोड़ा कुछ याद आ रहा है कैसे लिखा था first principle? We had applied first principle method. Limit h tending to 0. F of x plus h minus f of x upon h. The same formula here also. Limit delta z I'm taking instead of h. So limit delta z tending to 0, f of z plus delta z. It is same like f of x plus h minus f of x upon h. Okay. So this is the formula for differentiability. So same procedure, whatever we have done for real numbers, the same thing is extended to complex numbers. Only thing, slight differences there. So wherever difference comes, I will let you know. Okay, till now the definitions are the same. Next, we have the main topic that is called as the analytic function. The whole complex number module deals with the analytic function. First type of problem is prove that the function is analytic, or find some constants so that the function is analytic. Find the analytic function. Everywhere you have the whole chapter deals with the analytic function. So what is an analytic function? Now, analytic function means, suppose you have some domain. Okay, suppose you have some domain, some region is given. If the function is differentiable at each point of that domain, if suppose you are having some region, कुछ तो एक region हमारे पास है, ठीक है? अगर वो function हर एक जगह पे differentiable है in that particular region, then the function is said to be an analytic function. So single valued function which is differentiable at each point of the domain D, then it is called as an analytic function. The other names given to analytic functions are regular functions, holomorphic functions, and analytic regular or holomorphic functions. Agar wo different, not at all at one point in that region, if it is differentiable at all the points of that particular domain, then the function is said to be analytic function. And if the function is not analytic, it is said to be a singular function. If the function is not an analytic function, then the function is said to be if the function is not analytic at a particular point, it is said to be a singular point or a singular function. Okay? So these are the basics of some complex numbers. The main thing starts from here.
Cauchy-Riemann equation in Cartesian coordinates. This is a very important theorem. In short, we say CR equations. Okay, so analytic functions means CR equations. The whole chapter deals with your analytic functions and CR equations, Cauchy-Riemann equation. So what is the condition? No proof is there, only the theorem we have to remember. So if the function W is analytic, then the partial derivatives of u and v with respect to x and y, that is dou u by dou x, dou u by dou y, dou v by dou x, dou v by dou y, these partial derivatives are continuous and it satisfies this condition. Dou u by dou x is dou v by dou y. I will pronounce it as dou, okay, for partial derivatives. Because there are different pronunciations, but I'll use dou for this partial derivatives. Similarly, dou u by dou y is minus dou v by dou x. This equation is called as the CR equation. ठीक है, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फंक्शन इज एनालिटिक. क्लियर? अगर फंक्शन एनालिटिक है तो पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? देयर इज द फंक्शन इज नॉट बिकमिंग इन्फिनिटी एट एनी पॉइंट. ठीक है, जो पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हम निकालेंगे, that functions should not become infinity at any point. That is called as continuous. And if it satisfies this condition, it is said to be an analytic function. तो हमारा first type of problem ये रहेगा कि show that the function is analytic. तो हमें क्या करना पड़ेगा? W को u plus iv put करना है, z को x plus iy, and calculate these partial derivatives and show that this condition is satisfied. Then the function is said to be an analytic function. ठीक है, तो अगर analytic है तो ये दो conditions true है, और अगर ये दो conditions true है तो function is analytic. And this second condition is called as the Cauchy-Riemann equation or the CR equations. ठीक है, so just take down this CR equations because we'll be using this CR equations in the whole chapter, in the whole module only. कुछ भी याद नहीं आया तो एग्जाम में लिख देने का CR equation. At least you will get 1 mark for that. Okay, the whole chapter, I said 23 marks are there for this chapter, this module. So everywhere you have to make use of the CR equation. So in short, I will write the CR equation like this. Ux is equal to Vy. Uy is equal to minus Vx. ठीक है, ux का मीनिंग होता है dou u by dou x, partial derivative of u with respect to x. vy का मतलब होता है partial derivative of y, v with respect to y. तो अभी याद कैसे रखना है? हमको लिखना है uv, यहाँ पे भी लिखना है u into v, u and v. ठीक है, पहले x आता है फिर y आता है, तो ux is equal to vy. नेक्स्ट इसमें y से स्टार्ट होता है तो उल्टा डायरेक्शन माइनस साइन आ जाता है. It is not that, just to remember the formula I'm telling you. There are some concepts behind that. तो ux मतलब u v लिखना है दोनों जगह. पहले x लिखो फिर y लिखो. सेकेंड इक्वेशन पहले y लिखना है फिर x लिखना है, क्योंकि हम उल्टा लिख रहे हैं इसके लिए एक माइनस साइन. So remember the formula in that manner. ठीक है, ux is equal to vy, uy is equal to minus vx. This is the first condition you have to remember in this complex variable module. Remember the CR equation, ux is equal to vy and uy is equal to minus vx. Then in any one of these conditions, because actually when we derive the CR equations, we get these two conditions, and from these two conditions only we get the CR equations. Okay, so since the proof is not there in your syllabus, I'm not going to derive those things. तो हमें खाली ये याद रखना है. Don't even remember this, just remember only one equation. f of z क्या होता है? u plus iv, है ना. f of z हमने क्या लिया था? w, that is u plus iv. तो f dash of z हो जाता है ux plus ivx. ठीक है, ये दो इक्वेशंस याद रखो पूरे चैप्टर्स में. ux is vy, uy is minus vx and f dash of z is ux plus ivx. ये कैसे याद रखना है? If you know f of z is u plus iv, then f dash, the derivative becomes ux plus ivx. ठीक है, so these two conditions you remember
to solve the problems in complex variable. ठीक है? So write these two conditions in your notebook. Remaining part I will share the PPT. For time being, just write these two condition. Ux equal to Vy. कैसे लिखना है मैंने बताया, uv लिखना है, uv लिखना है, फिर ux uy vx and then minus sign because we are writing y and x. ठीक है? फिर f dash of z is ux plus I vx. Written these two conditions, then I can go to the first problem. So everywhere you have to make use of the CR equation and f dash of z. If not f dash of z, at least the CR equations. I think in mostly all the problems we are using f dash of z also, except a few problems. So I will go to the first problem now. Determine whether the following functions are analytic, and if so, find their derivatives. Determine whether the following functions are analytic, and if so, find their derivative. पहला प्रॉब्लम है f of z is equal to z square. तो हमें प्रूफ करना है कि फंक्शन f of z एनालिटिक है, और अगर एनालिटिक है तो ही उसका डेरिवेटिव निकलेगा, नहीं तो नहीं, बिकॉज एनालिटिक का मीनिंग ही ऐसा है कि द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. सो इफ द फंक्शन इज एनालिटिक देन ओनली वी हैव टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव्स, अदरवाइज वी नीड नॉट कैलकुलेट. ठीक है? तो पहले हमें क्या करना है, वट एवर इज z रिप्लेस इट बाय x प्लस आई वाई. ठीक है? जो भी फंक्शन दिया है z के बदले x प्लस आई वाई पुट करना है, और f ऑफ z के बदले u प्लस आई वी. ठीक है? जो भी इक्वेशन दिया है हमें प्रूफ करना है कि फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं. तो उसके लिए जो अगर x और y में दिया है तो हमें कुछ नहीं करना है. अगर z को x और y में नहीं दिया है तो रिप्लेस z बाय x प्लस आई वाई, एंड f ऑफ z इज ऑलवेज रिप्लेस्ड बाय u प्लस आई वी. w दिया है तो भी u प्लस आई वी. ठीक है? फर्स्ट स्टेप हमको ये करना है. सेकेंड स्टेप, नाउ सब्स्टिट्यूट हियर. फंक्शन दिया है f ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर. ठीक है? तो f ऑफ z के बदले u प्लस आई वी और z के बदले x प्लस आई वाई. Okay, whatever. The first step is replace z by x plus iy, f of z by u plus iv. Substitute everything in the given function. So u plus iv हो जाता है x plus iy the whole square. Next will be, we have to show that the function is analytic. मतलब हमको partial derivatives निकालने हैं, ux, vy, uy, vx. उसके लिए हमें पहले u और v निकालना है. So what are u and v? U and V are the real and imaginary part on the left hand side. So now we have to get the real and imaginary part on the right hand side. To get the real and imaginary part on the right hand side, expand this. A plus b whole square हमें expand करना है. So I will get x square plus or a square plus 2ab plus b square. है ना? x की वैल्यू, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू i y है. That is why I am writing x square plus 2i xy plus i y the whole square. ठीक है? Now what is I square? We know it is equal to -1. So I will replace x square plus 2i xy minus y square. ठीक है? So whatever was the function, we have expanded that and got the real part and the imaginary part. रियल पार्ट का मतलब क्या होता है, बिना आई वाले टर्म, एंड इमेजिनरी पार्ट का मतलब इज आई वाले. आई के अलावा जितने टर्म्स है, दैट इज कॉल्ड एज द इमेजिनरी पार्ट. ठीक है? सो नाउ इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. वी हैव रिटन u प्लस आई वी, एफ ऑफ z को u प्लस आई वी लिया है, z को x प्लस आई वाई लिया है, इसको एक्सपैंड किया है. नाउ वी आर इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. तो u क्या आएगा, u is the real part, मतलब विदाउट i वाले टर्म्स जो है वो u हो जाएगा. तो I will write u is equal to x square minus y square. ठीक है? v क्या हो जाएगा, 2xy. Equating real and imaginary part, u is x square minus y square and v is equal to xy. ठीक है?
Now we have to calculate the partial derivatives. Partial derivatives कौन कौन से हैं? ux uy, vx vy. ux का मीनिंग क्या होता है? डो u by डो x, या u को हमें partially x से डिफरेंशिएट करना है. तो what is the value for the partial derivative of u with respect to x? What will be ux now? जो भी u है उसको हमें x से डिफरेंशिएट करना है. तो what will be the value, what will be the function ux? 2x, करेक्ट. तो ux हो जाता है 2x. what will be uy? uy क्या होगा? u को हमें y, yes it is minus 2y. okay Darshana, you have written plus, I think. okay, it is minus 2y, yes. So ux is 2x, uy is minus 2y. Similarly, now v को differentiate करना है. v is equal to 2x. So what is vx, partial derivative of v with respect to x? Yes, 2y. So vx is equal to 2y and vy is equal to 2x. ठीक है? Right? Understood till here what we have done? Replaced f of z by u plus iv, z by x plus iy, equating real and imaginary part. Okay, अभी हमें ये opposite वाले देखने हैं, ux और vy. Okay, you have ux here, 2x, vy here. ये जो दो है opposite direction, मतलब opposite और cross multiply we can say, ये 2x है, ये भी 2x है. तो I can write ux is equal to vy. और ये दो है वो ऑपोजिट होना चाहिए, अगर एक प्लस है दूसरा माइनस होना चाहिए. ठीक है, तो ux is equal to vy and uy is equal to minus vx. So these are the CR equation. So I will get ux is equal to vy and uy is equal to, तो जब ऐसा लिखोगे तो you can just see the cross multiplication part. ux जो है vy से सेम होना चाहिए और uy जो है minus vx होना चाहिए. So in this case it is true. And what about the function? If I take ux, uy, vx, vy, this function becomes infinity at any of the values of x and y. कभी भी infinity होगा. Infinity कब होता है? जब denominator में terms रहते हैं. It will not become only when x is infinity, then it is infinity. But normally x will never turn to infinity. अगर denominator में zero है तो ही हमारा function infinity होता है. So here this function is a continuous function. So I will write all the partial derivatives are continuous. CR equations are also satisfied. So f of z is an analytic function. ठीक है, f of z is an analytic function. तो हमारा aim है u निकालना है, v निकालना है, ux, uy, vx, vy. Check whether the CR equations are satisfied. And if the CR equations are satisfied, and if suppose any one of the CR equations are not satisfied, then the function is not analytic. ठीक है, एक भी अगर satisfied नहीं होता है तो function is not analytic. Okay, so here since CR equations are satisfied, the function is analytic. अभी क्या पूछा था? If the function is analytic, then find its derivative. Okay, if the function is analytic, find its derivative. So I told you to remember f dash of z is ux plus I vx. ये कैसे याद रखना है? What is f of z? f of z को हमने लिया है u plus iv. तो f dash of z हो जाता है ux plus ivx. So what is ux we have got in the previous step? ux हो गया 2x, vy हो गया 2x, sorry vx हो गया 2y. हमें ux और vx चाहिए. तो ux is 2x, vx is also vx is 2y. So I will substitute for that. So ux is equal to 2x, vx is equal to 2y. Now in the next step, I can take 2 common. The remaining will become x plus iy. Now what I've taken x plus iy in the beginning as z. So I will get the answer. Because f dash of z का जो answer है वो z में होना चाहिए. x और y में नहीं रहना चाहिए. तो f dash of z equal to 2z. What was the function given? Z square. The function was given z square. तो z square का डेरिवेटिव नॉर्मली x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है. तो यहां पर भी z स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2z इफ द फंक्शन इज एनालिटिक. अगर फंक्शन एनालिटिक है तो हम लोग नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं. यू कैन समटाइम्स यू मे हैव टू शो बाय दिस मेथड, बट आंसर तुम्हारा उसका डेरिवेटिव का पार्ट ही आना चाहिए अगर फंक्शन एनालिटिक है कि है या नहीं. ठीक है,
So any doubt in this problem? Clear all of you what has to be done? पहला हमें ux uy vx vy निकालना है. अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाइड है, चेक करो वेदर ऑल द पार्शियल डेरिवेटिव्स कभी भी इंफिनिटी होता है कोई भी वैल्यूज ऑफ x और y के लिए एक्सेप्ट इंफिनिटी. Analytic means the function is differentiable at a point and around some. Suppose you have some region. अगर एक region है या अपना एक क्या बोलते हैं एक domain है. If the function is analytic or if the function is differentiable at all the points of that domain, then the function is said to be an analytic function. Differentiable ही है लेकिन एक particular point पे नहीं है. It is differentiable at all the points inside that particular domain. Okay, clear, Nitesh? ठीक है? That is the meaning of analytic function. And to prove that the function is analytic, we have to show that the CR equations are satisfied. And if the CR equations are satisfied, then automatically f dash of z, you will get the answer as normal derivative. अगर z square दिया है तो 2z, अगर z cube दिया है तो 3z square, ऐसा ही आंसर आएगा तुम्हारा. Okay, but you have to show it in this manner. ठीक है? So can I go to the next problem now? Yeah. F of z is e raised to z. Yes. Simple, सबसे easy topic actually complex का part है, I feel. ज़्यादा बड़े भी नहीं है problems. It's not confusing also. Just like your Laplace and inverse, there are so many properties in inverse Laplace transform as well as. So here there are. It's a straightforward analytic function, CR equations, and the derivative part. Okay, so next problem, f of z is equal to e raised to z. F of z is equal to e raised to z. तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है? f of z को u plus iv और z को x plus iy. ठीक है? तो फर्स्ट स्टेप में जो भी फंक्शन f of, just try doing this problem so that you will be able to understand. f of z को u plus iv and z को x plus iy. ठीक है? सेम प्रोसीजर. तो z is x plus iy, w is u plus iv. तो क्या आंसर आएगा? u plus iv is equal to e raised to x plus iy. करेक्ट. ठीक है? अभी हमें क्या करना है? व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? हमको u और v निकालना है. तो u और v निकालने के लिए हमें क्या करना है? u and v आर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड. तो राइट हैंड साइड का भी हमें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट निकालना है. ओके, नाउ टू कैलकुलेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फॉर e रेज टू फंक्शन, जस्ट सेपरेट दिस. ठीक है? e रेज टू x प्लस iy को हमें लिखना है e रेज टू x इंटू e रेज टू iy. ठीक है? जब भी e रेज टू फंक्शन का हमें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट निकालना है तो वी हैव टू जस्ट सेपरेट दैट. e रेज टू x into e रेज टू iy. And what is e raised to I theta, you remember? Or e raised to iy is cos y plus I sin y, correct? So e raised to I theta, we know it is equal to cos theta plus I sin theta. So I will replace e raised to iy by cos y plus I sin y. Okay? So e raised to x into e raised to iy is e raised to x into cos y plus I sin y. Sin y. This is the method of separating real and imaginary part for e raised to function. Log का अलग method है, sin का अलग है, cos का अलग है. Only those trigonometric function है. What is that? Sin, cos, e raised to and log. Okay, we have only so many functions where we should know how to separate real and imaginary part. Now what is the real part? U is equal to, अभी हमारा रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट राइट हैंड साइड में आ गया है. रियल पार्ट इज e रेज टू x cos y, इमेजिनरी पार्ट इज e रेज टू x sin y. इसको अंदर लेना है. e रेज टू x को हमें ब्रैकेट के अंदर लेना है. तो u हो जाएगा e रेज टू x cos y एंड v हो जाएगा e रेज टू x sin y. u is equal to e रेज टू x cos y and v is equal to e रेज टू x sin y.
Again calculating ux uy vx vy. तो ux partial derivative of u with respect to x क्या होगा? What is the partial derivative of u with respect to x? y का जो कांस्टेंट है, y का जो टर्म है कांस्टेंट हो जाएगा, same as u function, correct? So it is e raised to x into cos y. तो ux is equal to e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x ही होता है, इसीलिए e raised to x cos y. Now what about uy? u को हमें y से डिफरेंशिएट करना है, तो what will be uy? Yes, uy में x कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव निकालना है, तो e raised to x वैसे ही रहेगा और cos y का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन y. तो आई विल राइट uy इज इक्वल टू माइनस e raised to x sin y. ठीक है. सिमिलरली vx एंड vy निकालना है. v नो व्हाट इज v. नाउ कैलकुलेट vx एंड vy. v को x से डिफरेंशिएट. ओनली समटाइम्स द मिस्टेक कम्स हियर ओनली. When you differentiating it partially, just be careful कौन से फंक्शन से हम डिफरेंशिएट, कौन से वेरिएबल से डिफरेंशिएट कर रहे हैं. कीप द अदर वेरिएबल एज अ कांस्टेंट. सो vx भी सेम हो जाएगा बिकॉज e raised to x का e raised to x ही है, और vy में sin y का डेरिवेटिव, दैट विल बिकम cos y. ठीक है. तो नाउ चेक द ऑपोजिट पार्ट. क्रॉस अगर किया ux और vy एंड दिस आर ऑपोजिट टू ईच अदर, तो ux इज इक्वल टू vy and uy is equal to minus vx. ठीक है. तो यहां पे अगर ऐसा लिखा ना तो समझ में आ जाता है कि ऑपोजिट वाले इक्वल है कि नहीं. If I write u here, v here, then I can write ux is equal to vy and uy is equal to minus vx. So it is easy to remember the formula also. ठीक है. तो CR equations are satisfied. Now tell me for which values or for any values of x and y, ux, uy, vx, vy becomes infinity. कभी भी साइन फंक्शन कॉस फंक्शन इंफिनिटी जाता है. वी नो tan फंक्शन इज इंफिनिटी, बट tan sin and cos are not becoming infinity at any values of x and y. Similarly, e raised to infinity is infinity. Only when x is infinity, then only that function is infinity. ठीक है. तो ये दोनों, ये चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस भी है, सो फंक्शन इज एनालिटिक. ठीक है. CR इक्वेशंस आर सैटिस्फाइड एंड द फंक्शन इज एनालिटिक. ओके. देन हमें क्या निकालना है, उसके बाद क्या करना है, फाइंड इट्स डेरिवेटिव f dash of z. So by the formula f dash of z is equal to ux plus ivx. And I told you अगर डेरिवेटिव, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो डेरिवेटिव सेम आना चाहिए. e raised to z का डेरिवेटिव e raised to z ही आएगा. यस तेजस, यू आर राइट, e raised to z ही आना है, लेकिन कैसे प्रूव करना है. तो f dash of z is equal to ux plus ivx. ठीक है. तो ux क्या था हमारा, ux was e raised to x cos y एंड यहाँ पे e raised to x sin y. तो हमें सब्स्टिट्यूट करना है, ux के बदले e raised to x cos y, vx के बदले e raised to x sin y. e raised to x is common, so I will take outside cos y plus I into sin y. है ना, e raised to x common है तो मैंने बाहर ले लिया cos y plus I sin y. Then I have, now again cos theta plus I sin theta is e raised to I theta. Just the back procedure, what we have done in the beginning, that we have to do it now. So e raised to x into e raised to iy. Again, I'm combining these two steps to e raised to x plus iy, which is equal to e raised to z. ठीक है. तो इतना देखना है कि अगर एनालिटिक फंक्शन है तो डेरिवेटिव सेम भी आने वाला है. You have to manipulate f dash of z in such a way that you get that derivative part. Again, when we move further, we have easy methods of calculating f dash of z also. For time being, just understand this method. We have a different methods for calculating f dash of z. That time we can apply that also in this case. ठीक है. क्लियर. सेकेंड फंक्शन e raised to z, पहले हमने लिया z स्क्वायर, सेकेंड लिया e raised to z. नेक्स्ट ले लो cos z. cos z. फिर से क्या करना है हमें, z को x plus iy
एफ ऑफ जेड को यू प्लस आई वी। Put z is equal to x plus iy. F of z is u plus iv. So what will we get? U plus iv is equal to cos of x plus iy. Cos of x plus iy. So expand cos of a plus b. Cos of a plus b is cos a cos b minus sin a sin b. Cos of a plus b is cos a cos b minus sin a sin b. One second. Cos a cos b minus sin a sin b. So now, do you remember we have done in, what is that, hyperbolic function? Cos of iy. I don't know how many of you remember that formula. Okay, very good. Cos hy. Cos iy is cos hy and sin iy is I sin hy. Very good. So these are the formulas we have used in the hyperbolic function. Cos iy is cos hy and sin iy is I sin hy. Okay. So here, and similarly when you have cos hiy, that becomes cos y, and sin hiy becomes I sin phi. I have given these formulas in the prerequisite part. So I'm just recalling whatever we have done. So now substitute here. Cos x cos iy. Cos iy के बदले cos hy और sin iy के बदले I sin hy. Okay. So this is the method of simplifying the what is that, or separating real and imaginary parts for cos sine trigonometric functions. Cos of a plus b, cos of a minus b, sin of a plus b and sin of a minus b. ओके तो हमने क्या किया है, पहले cos of a plus b को cos a cos b minus sin a sin b किया है एंड देन रिप्लेस cos iy. cos के अंदर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो हो जाता है cos hy और sin के अंदर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो हो जाता है I sin hy. A purely imaginary number when you have inside sin or cos, then वो पूरा फंक्शन चेंज हो जाता है. cos का फंक्शन cos hyperbolic हो जाता है और sin का फंक्शन sin hyperbolic, but you have an extra I here. So we get u is equal to, now equating real and imaginary part. So u will become cos x cos hy and v will become minus sin x sin hy. Okay? So if I equate real and imaginary part, I will get u is equal to cos x cos hy and v is equal to minus sin x sin hy. After you have written plus in between, cos y cos hy plus नहीं आएगा. cos के फॉर्मूला में माइनस बीच में आता है, तो इस cos का फॉर्मूला ही यूज करना है, उसमें फिर cos iy is cos hy and sin iy is, yes, it's okay, sin I sin hy. So u is equal to cos x cos hy and v is equal to, now I told you डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबॉलिक, अगर मैंने cos hy का डेरिवेटिव निकाला तो sin hy, there is no minus sign when we differentiate cos hyperbolic function. The reason is, just write in your book what is the formula for cos hy. cos hy का formula क्या होता है, e raised to y minus plus e raised to minus y upon 2. उसको differentiate करो तो क्या आएगा, e raised to y का डेरिवेटिव e raised to y हो जाएगा, e raised to minus y का derivative minus e raised to minus y. So we will get the function for sin hyperbolic. Okay.
There is no minus sign when we differentiate cos hyperbolic. Similarly, sin hy ka derivative is cos hy. Nowhere we get minus sign when we differentiate or integrate sin and cos hyperbolic function. तो ux हो जाएगा. Now cos का derivative is minus sign. Okay, cos का derivative is minus sign, but cos hyperbolic का derivative is sin hyperbolic only. तो ux हो जाएगा minus sin x and uy हो जाएगा cos x ऐसे ही रहेगा cos hy का sin hy. ठीक है, ux is minus sin x cos hy and uy is cos x sin hy. There is no minus sign when we differentiate cos hyperbolic function. Remember that. Agar if you're not remembering, at least you can write the formula for cos hyperbolic and differentiate and see. Similarly, vx क्या होगा? sin x का डेरिवेटिव cos x, so minus sign वैसे के वैसे ही रहेगा, and vy में sin hy का डेरिवेटिव will be cos hy. ठीक है? So these are the partial derivatives: ux uy, vx vy. Again, check the opposite part. Ux vy, are they same? Similarly, uy and vx, they are negative to each other. So ux is equal to vy, uy is equal to, that is why I write it in this format so that you can cross verify here itself whether CR equations are satisfied. Okay, so ux is equal to vy, uy is equal to me. Again, these functions are not becoming infinity at any of the points. The function is analytic. Because why? Cos hy is also not becoming infinity because cos hy and sin hy are also in terms of e raised to. And e raised to infinity is only infinity. For no other value, e raised to will become infinity. That is why these functions are continuous functions. ठीक है, तो अभी f dash of z निकालना है. Just try doing f dash of z. कैसे मैं करती हूँ यहाँ पे दिखाती हूँ. So substitute for ux and vx. You know what should be the answer? Answer क्या आना चाहिए अपना? फंक्शन था cos z, तो आंसर क्या आना चाहिए? What should be the function f dash of z? माइनस साइन जेड. करेक्ट, माइनस साइन जेड. यस, इट्स अ कॉस फंक्शन, तो माइनस साइन जेड आंसर आना चाहिए. तो कैसे आता है हमको? हमें माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस आई वाई में लाना है. ठीक है, माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस आई वाई में हमको लाना है. तो हम क्या करेंगे? साइन एक्स कॉस एच वाई, यू एक्स और यू वी एक्स की जो फंक्शन है सब्सटीट्यूट कर रहे हैं. माइनस साइन इज कॉमन, तो आई कैन टेक माइनस साइन कॉमन. एंड अगेन हमें चाहिए साइन ऑफ एक्स प्लस आई वाई. तो हम क्या करेंगे? फिर से cos हाइपरबॉलिक को cos आई वाई लिखना है, sin एच वाई को sin आई वाई, आई sin एच वाई को sin आई वाई लिखना है. नाउ इफ आई टेक माइनस साइन कॉमन, आई विल गेट sin a cos b plus cos a sin b, which is sin of a plus b, and that is equal to minus sin z. ठीक है, we know the answer, so try to adjust the terms in such a manner that you have to get sin of x plus i y माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस आई वाई. एंड माइनस उल्टा भी जा सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां से भी ऐसा जा सकते हैं हम लोग. बैक कैलकुलेशन यू कैन से. तो माइनस साइन जेड आंसर आना चाहिए, तो साइन ऑफ एक्स प्लस आई वाई आना चाहिए. अगर साइन ऑफ एक्स प्लस आई वाई होना है तो हमारे पास चाहिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का टर्म. तो जस्ट ट्राई टू गेट टू दैट पर्टिकुलर फॉर्म. यू हैव टू गेट द आंसर इन टर्म्स ऑफ द डेरिवेटिव. Hope you're following, all of you. Is it better than Laplace transform? Yes? What do you feel? This is better or Laplace is better? This is much better than the Laplace part. इतने सारे properties वहां पे याद रखने पड़ते हैं. Yes. So you should not leave any topic in this complex. ठीक है? अच्छे से करना है इसको. खाली डेरिवेटिव का पार्ट आता है, आई डू अग्री टू दैट, लेकिन डेरिवेटिव एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल. नेक्स्ट वाला ले लो, cos हाइपरबॉलिक z.
cos hyperbolic z. फिर से सेम प्रोसीजर, z को x प्लस आई वाई, f ऑफ z को u प्लस आई वी, f ऑफ z को u प्लस आई वी, z को x प्लस आई वाई। ठीक है, तो आएगा u प्लस आई वी इज इक्वल टू कॉस h ऑफ x प्लस आई वाई। ठीक है, cos of x, cos h of x plus I y. Now, do you remember what is cos h of a plus b? I told you where to write the formula for hyperbolic function. अगर मैंने cos का फॉर्मूला लिखा, cos of a plus b क्या होता है? cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, cos का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। So I told you when you are having two sine का function या sin square का term, then there is a sign change. तो मतलब cos hyperbolic अगर हमको फॉर्मूला लिखना है तो it will be cos ha cos hb plus sin ha sin hb, क्योंकि cos के फॉर्मूला में माइनस है और वहां माइनस के बाद वहां पे दो साइन के फंक्शन आ रहे हैं। यस, दो साइन के फंक्शन आ रहे हैं, इसके लिए वो जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो cos h of a plus b will be cos ha cos hb plus sin, बिकॉज यहाँ पे दो साइन के फंक्शन आते हैं cos के फॉर्मूला में, तो व्हेन वी कन्वर्ट टू हाइपरबॉलिक फंक्शन देयर विल बी अ साइन चेंज। तो जो माइनस cos के फंक्शन में जो माइनस था बीच में वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ओके, cos hx cos hi y plus sin hx sin hi y, just like the previous problem. So what is cos hi y? It is cos y. Similarly, sin hi y is I sin y. Sin hi y is I sin y. ठीक है, तो again substituting that, I will get cos hx cos y plus I sin hx sin y. Similar problem है, थोड़ा सा डिफरेंस है खाली। I just took this problem just to show this expansion of sin of, कहाँ पे क्यों चेंज होता है साइन, इसके लिए मैंने लिया। Now, what will be the formula for sin h of x plus iy? Will it be same as the sin formula? अगर मुझे sin h of a plus b expand करना है, तो will the formula remain the same as sin of a plus b? Just लिख के देखो कोई डिफरेंस होगा क्या sin h of a plus b के फॉर्मूला में? If I write sin of a plus b का formula and then sin h of a plus b, will there be any change in the formula? Yes or no? Why no answers? When you write the formula for sin a plus b, will there be any change in the formula for sin h? That is a homework problem I have given you. Just tell me whether there will be any change sin h of a plus b के formula में. Am I audible? There will not be any change. Why? Because sin a cos b, एक साइन का फंक्शन है, cos का है, cos a sin b, वहां पे दो साइन के फंक्शन साथ में नहीं आ रहे हैं, तो there will not be any change. Yes, correct. There will not be any change. Correct. ठीक है, फिर से हमको u लिखना है, यहाँ पे v लिखना है. v is u is equal to cos hx cos y, v is equal to sin hx sin y. Calculate ux, uy, vx, vy, and check whether the CR equations are satisfied. So what is ux now? I told you cos h का derivative is sin hx. So sin hx cos y, uy will become
Cos y का derivative is minus sin y. That is why minus cos hx. Similarly, vx, vy. So if I see again, ux is equal to opposite parts, ux and vy, and uy and minus vx. They are equal. So the CR equations are satisfied. Okay. So when you have sine function, cos function, sine hyperbolic, cos hyperbolic, we should just expand sine a plus b or cos a plus b and then get the real and imaginary parts and write u and v. If you have e raised to term, then separate and then use the formula for e raised to I theta is cos theta plus I sine theta. CR equations. Again, we have the similar functions as in the previous case. Function is analytic. इसका आंसर क्या आना चाहिए बताओ? F dash of z का आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे? Yes, sin hz. Cos hz था, उसका डेरिवेटिव विल बी sin hz. तो वही फॉर्म में हमको आंसर लाना है. sin hz मतलब sin h of x plus iy के फॉर्म में लाना है. फिर से हम लोग क्या, अभी यहाँ पे कैसे एक हाइपरबॉलिक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो वी कैन नॉट कंबाइन. तो हम क्या करेंगे, हमें आंसर साइन हाइपरबॉलिक में चाहिए, तो इसलिए हम लोग कॉस को हम लोग कॉस हाइपरबॉलिक में कन्वर्ट करेंगे. तो वी विल राइट कॉस एच ऑफ आई वाई. सिमिलरली साइन वाई को आई साइन वाई को साइन एच आई वाई. अगेन साइन एच ए कॉस एच बी प्लस कॉस एच ए साइन एच बी विच इज साइन एच ऑफ एक्स प्लस आई वाई, दैट इज इक्वल टू साइन एच जेड. ठीक है. एनालिटिक होगा तो ही डेरिवेटिव निकालना है, अदरवाइज नो, वी शुड नॉट कैलकुलेट द डेरिवेटिव, वी कैन नॉट कैलकुलेट डेरिवेटिव. नेक्स्ट प्रॉब्लम, z square minus z bar or z conjugate. So put z is equal to x plus iy. Put z is equal to x plus iy. And f of z is equal to u plus iv. What will be the answer? Putting z is equal to u plus iv, z is equal to x plus iy, and u w is, or f of z is equal to u plus iv. Expand x plus iy the whole square. Expand x plus iy the whole square. I think same what we have done in the first problem. So same expansion I will get. Select the real and imaginary part. Real part is the term without I, imaginary part में. And don't write I when you equate the imaginary part. दोनों साइड में I रहेगा, इसके लिए वो I cancel हो जाता है. ठीक है? Don't write I into V and then confuse yourself. Keep it as Z bar का मतलब है conjugate. Z bar का मतलब होता है conjugate. अगर x plus iy is a complex number, Z bar will become x minus iy. Conjugate of Z is denoted by Z bar. Okay, अगर Z x plus iy है तो Z bar हो जाएगा x minus iy. That is called as a conjugate. Okay, equating real and imaginary part. The real part will become x square minus y square minus x. Imaginary part हो जाएगा 2xy plus y. Okay, u is equal to x square. The real part is x square minus y square minus x, and v is equal to 2xy plus y.
Now calculate ux, differentiating u with respect to x. So 2x ये 0 हो जाएगा -1. uy हो जाएगा -2y because x terms will become 0. Similarly vx हो जाएगा 2y and vy हो जाएगा 2x plus 1. So what about these functions now? Here we have 2x minus 1. Here we have 2x plus 1. Since ux is not equal to vy, CR equations are not satisfied. Therefore, the function is not analytic. Okay? Even though uy is equal to minus vx, but ux is not equal to vy, so the CR equations are not satisfied. The function is not analytic. That is a minimum condition. CR equations has to be satisfied for the function to be analytic. So since ux is not equal to vy, the function is not analytic function. ठीक है, तो हमें फिर f dash of z नहीं निकाल, because the function is not analytic मतलब not differentiable. तो f dash of z का सवाल ही नहीं आता यहाँ पे. Yeah, take one more if it is possible, or otherwise try to do it as a homework. 5 minutes है, तो we'll just finish it off. 1 by z. फिर से z को हम लोग को x प्लस आई वाई पुट करना है, w को u प्लस आई वी पुट करना है, तो हमारा आंसर आएगा u प्लस आई वी अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस आई वाई. ठीक है. नाउ हाउ टू कैलकुलेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन द राइट हैंड साइड. How to get the real and imaginary part on the right hand side. It is not 1 by x or 1 by 1. I've seen that when answers like this also, 1 by x 1. अभी जब डिनोमिनेटर में दो टर्म्स है तो वी कैन नॉट सेपरेट दैट. कभी बच्चे ऐसा लिखते हैं कि रियल पार्ट इज 1 by x एंड इमेजिनरी पार्ट इज 1 by y. इट इज नॉट सो. प्लीज डोंट मेक दैट मिस्टेक. Conjugate. When you have the denominator में complex number, multiply and divide by the conjugate. Multiply and divide by the conjugate means multiply and divide by x minus I1. Yes, x multiplying and dividing by x minus I1. So I will get x minus I1 upon x plus I1 into x minus I1. तो denominator क्या हो जाएगा? Numerator will be x minus I1. Denominator will be a plus b into a minus b. ठीक है. That is a square minus b square. A square होता है x square यहाँ पे. What is b square? I y the whole square. तो क्या आएगा? What will be the denominator? Yes, x square plus y square. Very good. So x square plus y square. So I will get u plus iv to be x minus iy upon x square plus y square. Yes. So I've got u plus iv is equal to x minus iy upon x square plus y square. Now what is u? So now how to write u? What is the real part of this right hand side? It is x upon x square plus y square. है ना? Real part will be x upon x square plus y square. And imaginary part I have not written because it is coming a little big, so I did not write that part actually here. ठीक है. u is equal to x square plus y square. तो ux मैंने निकाला है पहले. तो x square plus y square into 1 u by v मेथड यूज किया है. डिफरेंशिएटिंग ओनली विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके. y का जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा. तो x square plus y square into 1 minus x into 2x upon this. And if I simplify that, I will get y square minus x square upon x square plus y square, the whole square. Since the function was a little bit big, so I did not do it side by side. I've calculated uy over here. तो uy में y से डिफरेंशिएट करना है, तो x का पार्ट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा. तो v du x का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा माइनस u into dv, that is 2y upon this. That is equal to minus 2xy upon x square plus y square, the whole square. Okay. Same way, calculate writing v.
I've just applied U by V method, nothing else. ठीक है, वैसे ही V लिखना है, Vx का सेम वे Vx एंड Vy. So check whether Ux is equal to Vy and Uy is equal to minus Vx. And then try calculating f dash of z. Again, this function becomes infinity only when x and y are 0. है ना? Both अगर 0 by 0 form, 0 by 0 is still we can get a finite limit for 0 by 0 function. Only we can say it is not true for x equal to 0, y equal to 0, we can say maybe. Otherwise, at all the points, the function is analytic. ठीक है, सेम है क्या यहाँ पे? ux and vy, uy and minus vx, are they same? Hope all of you are given the attendance in the chat box. Yesterday, 5 or 6 students have not given. Please don't do that. Please fill the attendance, write your ID number, division and name, and then leave. I've tried one more attendance. I'll check because I have to leave the meeting. Then only I will get the attendance. I will check it. But to be on safer side, please write your attendance in the chat box. I hope this function is analytic. So I'll try calculating f dash of z. I've solved it here. Try calculating f dash of z. ठीक है? So calculating f dash of z minus 1 upon z square आंसर आना चाहिए, तो I'm just simplifying in that particular form. Hope you're clear with today's topic. Even if I'm giving the link, nobody is filling. It's anyway, it is the same. I tried with link also, still people are not filling that. Not even 50% are filling the link also. What is the use there? That is why I've thought I'll do it in this manner. It's a big work for me also. Copy paste everything and then do one by one. It's a big work for me also. That's what I have to provide links so that I will get all the things together. But then if all of you are filling in link, I can share the link.